I remember when like Varun के साथ मेरी पहली कुछ बातचीत जब हुई थी, and I told him कि हम aerial stunts करते थे. I'm not even kidding. He was like a child. He said, "अच्छा तुम हवा में उड़ती थी?" I said, "Yeah." I remember she was shooting for Dear Zindagi, and she was also promoting Udta Punjab that time. So there were multiple things happening, and I used to always see her running in, rushing out. अभी यहाँ जा रही है, अभी वहाँ जा रही है. So I asked her कि lines, you know, how do you remember your lines? Like when do you find that time to sit and remember your lines? So she said कि मुझे पता नहीं, मैं पढ़ती हूँ और मेरे दिमाग पे छप जाता है. So we used to have a great time, and then फिर हम जुबली में फिर मिले, and he was still the same, you know, fun person that he's, and very grounded. Yeah. It's a huge stage, Kingdom of Dreams. I don't know आपने देखा है कभी वहाँ show, but a massive stage, very very advanced in the technology, amazing. You know, they had these huge 3D screens on both sides. So because of course those aerial stunts were slightly scary, and especially if your parents are like sitting and watching you, उनके लिए तो it's like अरे, क्योंकि वो लास्ट शो जंगूरा का तक भी ना मेरे पेरेंट्स ऐसे बैठते थे कि ठीक है बहुत सुंदर लग रहा है, सब बहुत अच्छा है, लेकिन नीचे आ जाए, जल्दी से नीचे आ जाए. Hi Sukhmani, what's up? What's happening? Hi Tanakshi, thank you for having me. Nothing, just enjoying the Delhi weather. दिल्ली का आजकल मौसम थोड़ा अच्छा है, कभी भी एकदम से बारिश हो जाती है तो कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है. तो वो चल रहा है. एंड बीइंग अ दिल्ली गर्ल, आई थिंक आपसे बेटर ये बात कोई नहीं समझता. Absolutely. हमेशा से बड़ा अनप्रेडिक्टेबल वेदर वाला सीन रहा है, लेकिन अभी भी आप, अच्छा मैं आपसे सही बताऊं, एक चीज मैं पहले बताना चाहती हूँ, देन मैं पूछूंगी. वो पहले मैं ये बताऊंगी कि जुबली आपका जो लेटेस्ट रिलीज था, यू डिड फैब इन दैट, एंड आई बिंज वॉच्ड द शो, और हमने रिव्यू भी किया था. एंड आपका कैरेक्टर बहुत प्यारा कैरेक्टर था, यू नो, लाइक कुछ कैरेक्टर्स होते हैं उनको देख के आपको लगता है कि हाँ हम कनेक्ट कर पा रहे हैं सेल लेवल पे. सो दैट वाज देयर इन योर कैरेक्टर. क्या अभी तक उसके कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं? Touch wood. Yes. People have really enjoyed the overall show. Yeah. And the characters, each character was so well etched, so well defined. Everybody had a beautiful graph to their character. Yeah. So did Kiran. And I feel very, very happy I chose to do this, because I think Kiran is also very unlike of मैं जैसी हूँ real life में. So you know, it's something that I wanted to explore as an actor. Yeah. She's of course she's a girl who belongs to, you know, the partition time. Yeah. उसने वो era देखा है. उस time की जो ladies होती थी, they were very held together. Yeah. They were very pro for the family, that we're going to stand strong with the family. Like how probably I've seen my दादी. You know, कि कुछ भी है, जो भी है, हमारी family को इकट्ठा रखना है बस. You know, this is the ambition of my life. And very strong spirited, very solid women. So even Kiran, she's like she's there like a solid, silent back, you know, like a support system to Jay, which is Siddhant, and she always knows कि किसको कब क्या बोलना है, और ये सच में skill होता है. So you know, so all of these things put together is something that you know, Kiran was, and I had a great time shooting for it, and people have really liked it. They've loved the work. Yeah. So I'm very, very grateful. They absolutely have. और जिस तरह का एरा हम लोगों ने फील किया थ्रू द फ्रेम्स एंड एवरीथिंग, इतना पुराना टाइम, पार्टीशन वाला टाइम था, तो आपके लिए शूटिंग का किस तरह का माहौल था, वो हमारे लिए जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. क्या कॉस्ट्यूम्स वगैरह ऐसे थे कि आपको देख के ऐसा लगा था कि ओके हम कुछ और ही शूट कर रहे हैं? Absolutely. पहले तो हम लोग प्रेपरेशन शुरू करने वाले थे. वी वर गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग इन अप्रैल 2020. ओके. और मैंने ऑडिशन किया था इसके लिए 2019 में कहीं मिडवे. सो कोविड हो गया, और फिर 2 साल की वेट हुई. एंड लेकिन जब हम लोग, और कितना कुछ हुआ उन 2 सालों में, 3 सालों में टोटल, बट वी शॉट फॉर जुबली एंड ऑफ 2021. तो कितना कुछ हो चुका था. एवरीबडी, यू नो, वर्ल्ड वाइड हैड गॉन थ्रू सो मेनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस. पीपल हैड चेंज्ड, लाइव्स हैड चेंज्ड. सो जो हमने जुबली का प्रेपरेशन किया था, फाइनली जब हम शूट पे पहुंचे तो एक बहुत लंबा इमोशनल मेंटल टाइम गैप आया था सबके लिए. बट आई थिंक आई हैव टू से दैट विक्रम सर की विजन ऐसी है दैट द मोमेंट आई रीच द सेट, द मोमेंट आई स्टेप्ड इनटू द सेट, आई फेल्ट लाइक I didn't, you know, half my preparation was done, because it looked so, the eye to detail, the way they had created everything, the costumes, even you know, all our extras, everybody in the frame looked like they had just been transported from that era. So it was so, because एकदम से आपके लिए इतना believable हो जाता है सब कुछ,
तो और आसान हो जाता है आपका काम. So the way the set was designed was just amazing, and I think it really helped all of us, each one of us in the cast, to further understand our character and be further prepared for the character. और इसमें सिद्धांत भी थे जिनको बहुत प्रेज मिला अपने कैरेक्टर के लिए, बिकॉज आई थिंक उनका जो कैरेक्टर ग्राफ था दैट वाज समथिंग टू सी. उसके अलावा अपार शक्ति खुराना वाज आल्सो देयर. जो अपार शक्ति खुराना को हम जानते आए हैं इतने टाइम से, वो ये जानते हैं कि बहुत चुलबुले हैं, मस्ती करते हैं, बिल्कुल पंजाबी लड़के, किसी के आगे कुछ भी बोल देते हैं, है ना. लेकिन सेट पर वो कैसे थे? कोई ऐसा कोई इंस्टेंस याद है आपको जो हुआ हो? So Apar and I actually go back to the time of Badrinath की दुल्हनिया. उस टाइम पे हम दोनों ही लॉन्च नहीं हुए थे. He had shot for दंगल. वो दंगल शूट कर चुके थे पर दंगल रिलीज नहीं हुई थी. So we met on the set and he is a typical fun loving Punjabi boy who will be the life of wherever he is. He will make you laugh. He will make sure you are well fed. He will make sure that you are well fed with jokes and like he's really a live wire. So we used to have a great time, and then फिर हम जुबली में फिर मिले, and he was still the same, fun person that he's, and very grounded. Very, very humble, very grounded. The way I met him in Badrinath, I felt like there was absolutely no change, and I met him just like that in Jubilee. और जो उन्होंने रोल किया, मैं खुद सरप्राइज हो गई थी. That for me also this was like wow. Yeah, I think this was his career's best performance till date. He was absolutely fantastic, and he would also sometimes talk about कि मैंने theater में, he told me कि मैंने theater में किया है, like I've done these kind of roles, but it's just that in front of the camera अभी तक he had not got this one break or this one opportunity. But what an opportunity, and the work that he's done is fabulous. Very, very nice. And आपने बद्रीनाथ की दुल्हनिया की बात भी की है, and that was one film, even that is one film today also, जो कभी भी अगर टीवी पर भी आ रही थी तो लोग मस्ती में देखते हैं, because पता नहीं कुछ बात है. It's a very colorful, fun, light. It's a film you can sit with your family and watch. Exactly. It's a fun film loaded with amazing songs. Varun, Alia, the chemistry is great, and they both are also, Varun and Alia are very, they're both very chilled out. Very, very chilled out, very fun loving. I remember when like Varun के साथ मेरी पहली कुछ बातचीत जब हुई थी, so I thought once you ask a person आप कहाँ से हो, your name and basic questions, Varun would go into details. Like he would have a real conversation with you. He would want to know कि आप इससे पहले आपने क्या किया है, आपने और कुछ किया है, आप क्या करते थे, आप कहाँ से आए हो, about your family. So that makes you feel that, it makes you feel amazing. Thank you. I mean, there was no need for him to do that, but he did that, and then he makes you feel so comfortable. It's not like because I was an absolute newcomer at the time of Badri, but just by giving me that span of a conversation of really trying to get to know me, made me feel. It gave me a sense of belonging, that he was actually wanting to know कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैंने क्या किया इससे पहले. And I told him about Kingdom of Dreams, the shows that we did in Zangura, and I told him कि हम aerial stunts करते थे. I'm not even kidding, he was like a child. He said, अच्छा तुम हवा में उड़ती थी? I said, yeah. He said, कितनी ट्रेनिंग करी तुमने? मैंने कहा हमने 8-9 महीने ट्रेनिंग करी थी, because you need very solid core strength. You need to understand your body balance. I used to be on 40 feet and doing these aerial stunts. So he's listening to me like a child, and then he looks at Alia and he was like, Alia, see, we need something like this also in our profile. हमने कुछ ऐसा नहीं किया, हमें ये भी करना चाहिए. So I was like, so sweet, genuinely wanting to learn. He's very curious and very, very nice. And even Alia was also very, very chill, both of them. So I think that made the whole experience of Badri so much fun. No airs. They would make you come along, sit along, let's eat, let's get to know each other. Very fun, and even thanks to our director, Shashank was also so much fun and so fabulous. Very easygoing. He made sure that there was constantly fun happening at the set. और अगर ऐसा माहौल होता है तो आई थिंक आपको मजा आता है जो आप कर रहे हो, और आपको लगता है कि definitely this was a great decision. Badri was a joyride for all of us. It was a great time we all had. And of course, Alia was the busiest because she was doing so many things that time. I remember she was shooting for Dear Zindagi, and she was also promoting Urta Punjab that time. So there were multiple things happening, and I used to always see her running in, rushing out. Abhi yahan ja rahi hai, abhi wahan ja rahi hai. So I remember one day asking her कि how do you remember your lines? Because मुझे नहीं याद, जितनी भी मैंने shooting करी थी with Alia, I don't remember she ever forgot her line
or you know fumbled or she was late. Never. मेरे सामने तो कभी भी नहीं हुआ. It was something really amazing to you know learn and very admirable, very admirable. So I asked her, lines, you know, how do you remember your lines? Like when do you find that time to sit and remember your lines? So she said कि सुखमनी पता नहीं, मैं पढ़ती हूँ और मेरा दिमाग पे छप जाता है. I said, what a gift. Seriously, हाँ. So this is such a gift. And उसके साथ साथ आप जिस तरह से बता रहे हो कि जिस तरह का उनका schedule था पूरा का पूरा. वही, that's why I wanted to know difficult. when is she doing her lines, when is she preparing for the scene. So she said कि मैं, and she was very humble about it, nothing to show off कि अरे मुझे याद, nothing. She said, in fact she was a little embarrassed कि मैं पढ़ती हूँ, मुझे याद हो जाता है, you know, like छप जाता है मेरे दिमाग में. I said, wow, that's amazing. So good fun, lot of fun. तो हर प्रोजेक्ट से आप कुछ ना कुछ टेक अवे लेकर जाते हैं, चाहे बद्रीनाथ था, चाहे जुबली था, कहीं ना कहीं आपने एज एन एक्टर भी बहुत कुछ सीखा होगा. सेट पर आप जाते हो, डिफरेंट लोगों का काम करते हो, तो आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हो. बट हाउ डिड एक्टिंग हैपन फॉर यू? लाइक बीइंग अ दिल्ली गर्ल, क्या हमेशा से था बचपन से ही कि एक्टिंग में करना है? बिकॉज आपने खुद ही बताया कि आपने एरियल स्टंट्स किए हैं, डांसर आप हैं, एंड देन एमसी आप ऑलरेडी हैं, तो इतना कुछ साथ साथ चलता रहा, तो एक्टिंग का कब सोचा कि एक्टिंग करते रहा है? I was 19 years old when Kingdom of Dreams had sort of come into place. वहाँ मुझे पता लगा जंगूरा नाम का एक शो हो रहा था. So I went, I auditioned, and it was very surprising I got it. I was just 19, and my parents were like कि अभी तो graduation करनी है. So I thought हाँ graduation करनी है, but मुझे तो performing arts में ही जाना है. That's what I want to do. So I had to of course do my graduation, but Kingdom of Dreams hampered at the same time. तो मैं अपनी ग्रेजुएशन भी कर रही थी और मैं शोज भी कर रही थी रोज. सो किसी तरीके से आई यूज्ड टू क्रैम माय एग्जाम्स एंड फिनिश माय असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग एंड देन रन टू गुड़गांव, डू अ शो, गेट रेडी एंड यू नो बी ऑन स्टेज with TV actors, with actors from National School of Drama, FTI. So that's when I met Hussain and Gauhar for the first time. I was a bachcha totally. मुझे लगता था I'm just out of school and this is such a big stage. It's a huge stage. Kingdom of Dreams. I don't know आपने देखा है कभी वहाँ show, but a massive stage, very advanced in the technology. Amazing, you know. They had these huge 3D screens on both sides. So my first scene used to be I used to play the role of a princess. तो मैं एकदम ऐसे princess की तरह तैयार होती थी. और एक छोटी सी बोट पे मैं बैठती थी, एंड ऊपर से आई टू कम अपसाइड डाउन ऑल द वे. सो नीचे ऑडियंस है एंड 40 feet से आई टू डाइव डाउन. सो द सीन वाज एज इफ मैं अंडर वाटर स्विमिंग कर रही हूँ on top of the audience. So around all around us in the 3D screens, we used to have like these underwater organisms and fishes and starfishes. So that was the whole. So it was a very advanced show for its time in India, one of its kind at that level. So at the age of 19 to have had that opportunity, so I think उसके बाद तो I was very sure कि acting is my calling. But इतने सारा आप कर रहे हो, लाइक इतने एरियल स्टंट्स कर रहे हो, हवा में उड़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, घर वाले बोलते नहीं थे क्या कर रही है? अरे you know when so my father was a little skeptical because I'm talking almost 7-8 years ago. तो उस टाइम मैं अभी स्कूल से निकली थी और मैं वैसे भी स्कूल के बाद कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चल रही है. आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल आल्सो, आई वाज अ स्पोर्ट्स गर्ल. तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है. तो जब अगर 2 बजे स्कूल खत्म होता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 2:30 बजे घर पहुंच जाऊंगी. ऐसा कभी नहीं होता था. आई वुड बी डांसिंग और डूइंग थिएटर, कुछ ना कुछ चलता. अब प्रीफेक्टोरियल मीटिंग हो रही है, अब आई वाज अ प्रीफेक्ट आल्सो, और आई एम प्लेइंग बास्केटबॉल. सो ऑल दीज थिंग्स यूज्ड टू कीप मी रियली बिजी. सो एज इट इज माय पेरेंट्स फेल्ट कि बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है तुम्हारा, थोड़ा घर भी आओ, घर पर भी बैठो, बी लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड. So that used to, anyway my parents were feeling कि बहुत ज्यादा होता रहता है, थोड़ा घर भी रहना चाहिए. और जैसे मैंने बोला अच्छा मुझे तो ये शो करना है जाके गुड़गांव में, और शो रात को 8 बजे शुरू होता था and I thought it will finish by 10:30, 11. So my father said तुम रात को 12 बजे घर आओगी गुड़गांव से? I said हाँ पापा. So he's like no. So I said why not? It's a big opportunity. I understand his concern because he felt कि अपना just get your academics sorted. Right. तुम थिएटर डांस तो कर ही रही हो, just finish this and then do what you want. Right. But अब ये opportunity तो अभी आई थी ना, छोड़ती कैसे? So then I remember my producer, lovely lady, she told me कि why don't you bring your father? You get your dad, get your parents, make them watch the show. क्योंकि उस टाइम तक किसी को आइडिया नहीं था ये क्या चीज है, ये किस लेवल पे ये शो बना है. It was a very new concept initially, and it was singing का element नहीं था, but it was the first sort of you can say the Broadway of India. क्योंकि बहुत amazing चीजें हो रही थी. So then, so I took my dad, we got ready,
we you know, like me, my family, we went, we watched the show, and my father is watching the aerial stunts, and I told him कि मुझे इस रोल के लिए बोला है. So my father was like, are they sure? तुम्हें बोला है? Obviously, ये तो I said surprising yes, है. Papa. They've asked me for this role only, और मुझे खुद भी surprising लग रहा था because मैंने भी show नहीं देखा था. तो जैसे ही show खत्म हुआ, the producers came and they asked my family, you know, did you like the show and everything? So my father just asked them one question. मुझे नहीं पता late आएगी, क्या होगा, जैसे भी whatever the show is, will she be insured? Because of course those aerial stunts were slightly scary, and especially if your parents are like sitting and watching you, उनके लिए तो it's like अरे, क्योंकि वो लास्ट शो जंगूरा का तक भी ना मेरे पेरेंट्स ऐसे बैठते थे कि ठीक है, बहुत सुंदर लग रहा है, सब बहुत अच्छा है, लेकिन नीचे आ जाए, जल्दी से नीचे आ जाए. पेरेंट्स तो वो कंसर्न तो रहता था. तो that's the only question my father asked, will my daughter be insured, and rest I don't care about anything else. I didn't have to convince him any further. He was like, नहीं, do the show. It's a great show. अब आगे भी कोई प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप अभी काम कर रही हैं, या कुछ ऑडिशंस रिसेंटली दिए हैं जिनमें एक मतलब वेट है कि कुछ हो जाए अच्छा वाला? अभी recently ही कुछ I'm in conversation for 1 or 2 things. अभी कुछ इतना फाइनल स्टेज पर है नहीं, बट वी आर इन कॉन्वर्सेशन. और अब तो इंस्टाग्राम है, तो जैसे ही कुछ होता है तो एकदम से वी गेट टू नो वेरी वेरी क्विकली. ये बहुत अच्छा फायदा है ना ये इंस्टाग्राम वाला, एटलीस्ट लोगों को पता चलता रहता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ. और सबसे बड़ी बात है कि इतना ज्यादा कंटेंट हम डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं आज के टाइम में. ओटीटी ने कहीं ना कहीं बहुत डोर्स खोल दिए हैं, और इतनी सारी सीरीज आ रही हैं. तो मुझे लगता है कि एक्टर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, सभी आर्टिस्ट के लिए और क्रिएटिव फील्ड के लोगों के लिए this is the best time to be in the industry. It's opened up, you know, such a plethora of opportunities for so many people, not just actors, for writers, you know, for directors. मेरे आसपास ही I remember इतने सारे actors, directors, script writers होते थे who were very passionate, but कहीं ना कहीं opportunity नहीं मिल पा रही थी. But today I'm seeing them, you know, whether on Amazon or Netflix. कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, एटलीस्ट एक जगह मिली है जहाँ पर अब वो फाइनली अपनी क्रिएशन लोगों तक पहुँचा सकते हैं थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स. सो दैट्स अ बिग थिंग दैट्स हैपेंड. इट्स अ बिग चेंज. So looking forward now, सुखमनी, and we really hope कि जैसे जुबली जैसी आपने एक मास्टरपीस, लोग आज के टाइम में उसको मास्टरपीस बुलाते हैं, बिकॉज हमने इस तरह का कोई शो नहीं देखा था. जो एरा और जो जो वाइब उस शो ने कहीं ना कहीं क्रिएट की थी, दैट वाज समथिंग टू सी, समथिंग टू विटनेस. तो हम जस्ट होप करते हैं कि आप इसी तरह के अच्छे अच्छे और प्रोजेक्ट्स आगे करती रहे, और हमें कहीं ना कहीं दिखती रहे कि आज यहाँ रिलीज हो रहा है, आज वहाँ रिलीज हो रहा है, ऐसे ऐसे कुछ है ना. सो दैट इज देयर, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you so much for your time today. Thank you.